Hello, everyone. Hello, everyone. Welcome to all of you in FFD live chemistry classes. I hope everything is fine. केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इस पे हमारा डिस्कशन चल रहा था। तो पिछले दो वीडियोस में हमने पहले केमिकल्स इन फूड, उसके अलावा जो एक्शन ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन, इसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद अगले में हमने कुछ केमिकल्स एज ए मेडिसिन यूज होते हैं उन पे बात की थी। आज के क्लास में हम एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है और लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं ये, इनके बारे में हम आज के क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दीज, इनका फंक्शन क्या है और इनके केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। यस, तो आज के क्लास का टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में एंटी माइक्रोबियल, उसके अलावा एंटी हेलमेंथीस, इस पे भी हेल्थी स्टामाइन, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि एंटी एलर्जिक कहलाती है, उस तरह की मेडिसिन। उसके अलावा पहले हम एंटी माइक्रोबियल्स पे डिस्कस करेंगे। Now, antimicrobials, chemical substance used to cure disease caused by bacteria, fungi, and viruses are called antimicrobials. These include antimicrobials, antifungal, and antiviral agents. Now, discovery of antibacterial. In the year 1908, a German bacteriologist, Paul Ehrlich, developed the first antimicrobial drug known as salvarsan, which destroyed the bacteria spirochete responsible for syphilis, which is common in skin disease. For this discovery, Paul Ehrlich got Nobel Prize for Medicine. At the same time, he was also working on the different azo dyes which are colored in nature, and notice that similarities in structure of salvarsan and azo dyes, whereas salvarsan contains AS double bond AS and arsenic linkage, and azo-dyes contains N double bond N linkage. The tissues were selectively colored by the azo-dyes. In 1932, he synthesized the first effective antibacterial agent known as Prontosil, which resemble in structure to salvarsan. Like this is the structure of salvarsan, and this is the structure of azo-dyes. तो both are resemble. यहाँ बीच में AS डबल बॉन्ड का ये लिंकेज है, तो बेंजीन रिंग के बीच में, और यहाँ पे N डबल बॉन्ड N का। प्रोंटोसिल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इसमें N डबल बॉन्ड N स्ट्रक्चर है इस तरह से, और सल्फा एनिलामाइड, दिस द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फा एनिलामाइड। तो ये सेम स्ट्रक्चर शो करते हैं इस तरह से। These are the antimicrobial. Antimicrobial, some important examples of antibacterial drugs are sulfa drugs, antibiotics, quinolones, etc. तो पहले हम सल्फा ड्रग पे डिस्कस करेंगे। A group of drugs which are derivatives of para-amino benzene sulfonamide
which is commonly known as sulfanilamide, are called sulfa drugs, which showed antibacterial activity. A part of प्रोंटोसिल, जिसका कि अभी देखा, एक पार्ट है प्रोंटोसिल का सल्फा एनिलामाइड, जहाँ ये स्ट्रक्चर देखा था इसका, ये वन पार्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोंटोसिल। तो ये एंटी माइक्रोबियल की तरह एक्ट करते हैं सल्फा ड्रग्स जो हैं, इनके बारे में हमें थोड़ा यहाँ पे जानना है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फा एनिलामाइड, केमिकल नेम पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनामाइड। These were the first effective chemotherapeutic agent to be widely used against disease such as dysentery, pneumonia, tuberculosis infection caused by cocci infection. They have also been found to be active against gram-positive and gram-negative cocci, bacilli, and protozoa. At present, sulfa-anilamides have been largely replaced by antibiotics for the treatment of most of the bacterial disease. Now, some successful sulfa-anilamides are given here. Some sulfa drugs are the structure of some sulfa drugs. This is sulfapyridine, structure of sulfapyridine. This is sulfadiazine, and this is a sulfagonadine, most common drug, sulfa drug, and this is sulfathiazole. ये बहुत ही कॉमन सल्फा ड्रग्स हैं जिसे कि एंटी माइक्रोबियल, एज एंटी माइक्रोबियल बहुत टाइम तक यूज़ किया जाता रहा है। ये है सक्सीनिल सल्फाथायोजोल का स्ट्रक्चर, और ये है सल्फा एसीटामाइड। दीज आर द सल्फा ड्रग्स। अब ये किन का यूज़ क्या क्या है? पहला है सल्फापायरिडीन, इट इज यूज्ड टू क्योर निमोनिया। Sulfadiazine used to cure pneumonia, urinary and respiratory infection, dysentery, meningitis, etc. Now, sulfagonadine used to cure bacillary dysentery. This is the sulfathiazole, useful against staphylococcal infections and bubonic plague. तो दिस इज यूज इन द, जब प्लेग फैला था तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। उसके अलावा सल्फागोनाडीन इज ए कॉमन मेडिसिन जो डिसेंट्री वगैरह में स्पेशली यूज होती थी। नाउ सक्सीनिल यूजफुल इन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन सच एज बैसिलरी, एंड सल्फाथायोजोल यूज्ड इन डिसेंट्री एंड कॉलरा, and sulfacetamide. This is the one medicine, succinyl sulfathiazole, useful in intestinal infections such as bacillary, dysentery, and cholera. And last is sulfacetamide, used to cure urinary tract infection. See, antimicrobial again. The antimicrobials are the chemicals which destroy the microbes. In 19th century, German scientist Paul Ehrlich proposed a concept for the synthesis of some chemicals such are harmful to infection-causing agents but are not harmful to host. He prepared arsenic-based drug arsphenamine for the treatment of syphilis. Now it is used under the name Salvarsan. इसके बारे में हम पहले भी अभी बात कर चुके हैं। However, Salvarsan is toxic to human, but it is much more harmful to syphilis causing microbes. In 1908, Paul Ehrlich was awarded with Nobel Prize in the field of medicine. Now, Paul Ehrlich notice that AS double bond AS bond present in arsphenamine resemble with N double bond N bond found in azodiazine. जो हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं, which selectively dyes the tissue. In 1932, he prepared first antibacterial drug Prontosil, which resembled to Salvarsan structurally. Later, it was noticed that Prontosil
tonsil gets converted into a compound sulfa-anilamide, that is para-aminobenzene sulfonamide. It opened the way for the discovery of sulfa drugs. Sulfa drugs पे अभी डिस्कस हो चुका है. This is the Salvarsan and this is the Prontosil. दो पार्ट इसके होते हैं. उसके अलावा this is the structure of sulfa anilamide and azodies. तो दो पार्ट, दोनों पार्ट यहाँ पे मिल करके क्या बनाते हैं? Prontosil. Important derivatives of sulfa-anilamide are sulfadiazine, sulfadimethoxine, sulfadoxine and sulfapyridine, etc. Before the discovery of antibiotics, some sulfa drugs were in use as antimicrobials. They were used for the treatment of TB, pneumonia, diphtheria, etc. Structure of some important sulfa drugs are here. इसको हम पहले भी दिखा चुके हैं. Sulfadiazine, sulfa, this is the sulfapyridine, and this is the sulfagonadine, structure of sulfagonadine. This is, and this is the sulfathiazole. These sulfa drugs are very effective in bacterial infections, but they are not widely used owing to their allergic side effect. इनका एलर्जिक साइड इफेक्ट होता है, इसलिए इसका यूज कम कर दिया गया. उनकी जगह किसने ले लिया? एंटीबायोटिक्स ने. Those chemicals which are produced by microbes like bacteria, fungi, and are used to kill or reduce the growth of other microbes are called antibiotics. First antibiotic penicillin was discovered by Alexander Fleming from Penicillium notatum. This is a fungi. It is widely used in pneumonia and swelling of trachea. It is effective against gram-positive bacteria. Other antibiotics like streptomycin obtained from Streptomycetes and tetracycline effective against gram-negative bacteria are those gram-positive bacteria which are resistant to penicillin. Antibiotics are important and life-saving drugs. Now, action spectrum of an antibiotic represent the range of microorganisms against which antibiotic is effective. यानी कितने माइक्रोऑर्गेनिज्म पे एंटीबायोटिक कोई इफेक्टिव है उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स. Broad spectrum antibiotics are those which are effective against both gram-positive and gram-negative bacteria. And narrow spectrum antibiotics are those which are effective against one type, either gram-positive or gram-negative bacteria. Limited spectrum antibiotics are those which are effective against only one species of bacteria. Now, different important antibiotics are here. First is penicillin. Till date, about 6 types of natural penicillin have been isolated so far. General structure of some penicillin is here. General structure of penicillin is like this. R यहाँ पे जो है वो different medicine में different value होती है R की. बाकी general structure जो है उसका ये होता है. जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेंसिलिन इज, जो अभी स्ट्रक्चर देखा उसी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 911 C9H11O4SN2R. अब इसमें R की वैल्यू अलग अलग हो सकती है. क्या क्या हो सकती है वो हम यहाँ देखते हैं. पेंसिलिन के लिए G के लिए R इज इक्वल टू C6H5CH2. फॉर बेंजिल पेंसिलिन उसमें पेंसिलिन F है जिसके लिए R CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 होता है. पेंसिलिन K के लिए R CH2 हो 6 and CH3. पेंसिलिन V के लिए R होता है C6H5O CH2 and एम्पीसिलिन, फॉर एम्पीसिलिन R इज इक्वल टू CHNH2 और इधर C6H5. Semi-synthetic new and more effective form of penicillin
are ampicillin and amoxicillin. Major drawback in using penicillin is that some persons are sensitive toward it. So it is given after sensitivity check. Now chloramphenicol. It is a broad spectrum antibiotic. It is readily absorbed in gastrointestinal tract, and that is why it is administered orally. It is highly effective against typhoid, dysentery, high fever, some urinary tract infection, pneumonia, and bronchitis. Structure of क्लोराम्फेनिकॉल इज दैट, इस तरह से का स्ट्रक्चर होता है पूरा इसका. नाउ सिंथेसिस ऑफ क्लोराम्फेनिकॉल इज इजी and so their derivatives are easily available in market. Other broad spectrum antibiotics are tetracycline, chloromycetin, and ofloxacin. Other antibiotic is streptomycin, molecular formula C21H39, N17, and O12. It is effective against microbe causing tuberculosis or pneumonia. It is widely being used to cure tuberculosis. एंटीबायोटिक्स अभी जैसा कि डिस्कस किया है उसी की ये डेफिनेशन है. केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंजाई एंड मोल्ड्स and can be used to kill other microorganisms are called antibiotics. तो दोबारा डेफिनेशन सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, इसकी इस डेफिनेशन याद हो जाएगी. The first antibiotic discovered by Alexander Fleming in 1929 from the mold Penicillium notatum was penicillin. In 1938, Ernst Chain and Howard Florey isolated penicillin in pure form and proved its effectiveness as an antibiotic. It was introduced into medical practice in 1941. Penicillin is used against large number of infections caused by various cocci gram-positive bacteria. It is an effective drug for pneumonia, bronchitis, sore throat, and abscesses. Now, structure of penicillin already shown. यहाँ R की वैल्यू बताया था क्या क्या होती है. Several naturally occurring penicillin have been isolated. All of these have the empirical formula like this. अब यहाँ R की वैल्यू जो वहाँ चार्ट में थोड़ा बताया था, यहाँ और क्लियर करके है कि कहाँ पे R की क्या वैल्यू होती है. नेम ऑफ द नेम पेंसिलिन का, उसके अलावा केमिकल नेम. तो पेंसिलिन G और सेकंड वैल्यू ऑफ R लाइक दिस C6H5CH2. केमिकल नेम होता है बेंजिल पेंसिलिन. पेंसिलिन F और I और फर्स्ट, तो R की वैल्यू यहाँ पे की होती है और इसका केमिकल नेम है 2-पेंटेनिल पेंसिलिन. पेंसिलिन के और फोर्थ R की वैल्यू ये होगी, इसका नाम होगा N-हेप्टिल पेंसिलिन. पेंसिलिन X R की वैल्यू ये होगी और इसका केमिकल नाम है p-हाइड्रोक्सी बेंजिल पेंसिलिन. यहाँ पे Y पेंसिलिन Y के लिए R की वैल्यू ये है, इसका नाम है फेनॉक्सीमेथिल पेंसिलिन. एम्पीसिलिन के लिए R का नाम, R की वैल्यू है C6H5CHNH2 और इसका जो केमिकल नेम है वो भी एम्पीसिलिन ही है. इसी तरह मेथिसिलिन R की वैल्यू ये है और नाम मेथिसिलिन है इसका. और एमॉक्सीसिलिन के लिए R की वैल्यू ये है. यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस इसमें हो जाता है, इसमें OH है उसमें नहीं है. और इसका भी केमिकल नेम फिलहाल क्या है, एमॉक्सीसिलिन. In penicillin, a 4-member ring is fused to another 5-member ring. Structure of individual penicillin are given here. Penicillin G is the most commonly used. The penicillins are only sparingly soluble in water. However, their sodium or potassium salts are soluble in water.
Penicillins are found to be active against gram-positive strains. However, these are ineffective against gram-negative organisms. Organisms sometimes develop resistance to penicillin. Penicillins generally have low toxicity in comparison to sulfa drugs. However, in some cases, allergic reactions may result in. Penicillin is thus given after a test prick. The antibiotics which control the microbial disease can either be bactericidal or bacteriostatic. Examples are bactericidal is the drug which kill the organism in the body. For example, penicillin, ofloxacin, aminoglycosides, and bacteriostatic, the drug which inhibit or check the growth of the organism in the body. For example, tetracycline, chloramphenicol, and erythromycin and azithromycin. Scientists have discovered a number of other antibiotics. These have proved to be as effective as penicillin. But some of those are broad spectrum and are more effective. Now come on broad spectrum antibiotics. The complete range of microorganisms which can be killed by a particular antibiotics is called its spectrum. Antibiotics, which are effective against several different types of harmful microorganisms and thus capable of curing several infections, are called broadband antibiotics. Among these are chloramphenicol, tetracyclines, oxaloxacin, and vancomycin, or a mixture of different antibiotics. Penicillin have a narrow spectrum. Ampicillin and amoxicillin are semi-synthetic modification of penicillin. In India, penicillin is manufactured at the Hindustan Antibiotics in Pimpri and India Drug and Pharmaceuticals Limited (IDPL), Rishikesh, and in private sector of industry. तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में पहली आ जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिन. It was discovered in 1944 by Waxman. It is effective against tuberculosis. It is also used for other common infections like throat, lungs, ears, and kidney. It is very effective in the treatment of meningitis and pneumonia. Streptomycin is an amino base and forms salts that are very soluble in water. The sulfate and calcium chloride double states. The sulfate and calcium chloride double salts are widely amorphous powder. The molecule contains two strongly basic gonido groups and a weakly basic methylamine group. The structure of स्ट्रेप्टोमाइसिन इस तरह से है ये. तो दो ग्रुप कौन से हैं? टू स्ट्रांगली बेसिक guanido ग्रुप. तो ये दोनों क्या है? guanido groups. These are the basic group and weakly basic group नीचे वाला है, उसका क्या नाम है? methyl amino group. This is the methyl amino group. And complete structure of streptomycin is like this, इस तरह से. Streptomycin is rapidly absorbed after an intramolecular injection. Oral administration of streptomycin is of no value on the treatment. तो इसका streptomycin का इंजेक्शन ही यूज किया जाता है, ओरली नहीं देते. Now PAS, para-amino salicylic acid, and INH, isonicotin hydrazine or isoniazid, are also used for the treatment of tuberculosis. Now another broad spectrum antibiotics is chloramphenicol. It is a broad spectrum antibiotic. It was first isolated from a species of Streptomyces.
It has been produced synthetically on commercial basis. It is white or grayish white, needle-like crystalline substance. It has a bitter taste. 1 gram of chloramphenicol is soluble in about 400 ml of water. It is freely soluble in alcohol. The structure of this like chloramphenicol. It is effective against certain gram-positive and gram-negative bacteria, some rickettsia and viruses. It is very effective in treatment of typhoid fever, paratyphoid fevers, influenza, meningitis, pneumonia, whooping cough, and urinary tract infection. Chloramphenicol may cause serious complications and hence it should not be used indiscriminately or for minor infection. Chloramphenicol is high in high concentration inhibit the growth of animal and plant cells. Now other broad spectrum antibiotics is tetracycline. The tetracyclines contain hydronephthacene skeleton as the characteristic structure unit. The structure of tetracycline is like this. यहाँ पे जो वैल्यू R और R2 यहाँ पे है स्ट्रक्चर में देख सकते हो. Here is R1 and this is R2. तो अलग अलग मेडिसिन में R1 और R2 की वैल्यू अलग तक तो होती है. इसके आधार पे इसका नाम होता है, जैसे कि क्लोरोटेट्रासाइक्लिन या आर्यूमाइसिन के लिए R1 में Cl होगा, R2 की जगह H होगा. ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन और दिस इज नोन एज टेरामाइसिन, तो R1 में H होगा, R2 की जगह OH लगा होगा. उसके अलावा टेट्रासाइक्लिन R1 इज इक्वल टू R2 दोनों जगह पे H होगा. Now tetracyclines are broad spectrum antibiotics and are effective against a number of types of bacteria. It is effective against a number and types of bacteria, larger viruses, protozoa, parasites, and typhus fever. These can be given orally. Now, quinolones, broad spectrum medicine is quinolones. Other important class of antibacterial drugs which are neither sulfur drugs nor antibiotics are the derivatives of quinolones, such as ciprofloxacin and norfloxacin. This is the norfloxacin. These are widely used for urinary tract infection. Now antihistamines, ये सब क्या थे? एंटी माइक्रोबियल्स, जिसमें कि एंटीबायोटिक्स मेन थी, उसके अलावा सल्फा ड्रग. अब हम आते हैं एंटीहिस्टामाइंस. These drugs are also called anti-allergy drugs. Antihistamines are amines which are used as drugs to control the allergy effects produced by histamines. Histamines, antigens from environment and food create an allergic reaction to our body. In this situation, histamines are released from certain cells in our body and is produced by the decarboxylation of histidine, which is an alpha amino acid present in the body. इस तरह से रिएक्शन होता है. दिस इज दी हिस्टिडीन और ये डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है इसका और एलर्जी इफेक्ट से, और ये हिस्टामाइन में कन्वर्ट हो जाता है. Now, antihistamines are the drugs which diminish or abolish the effect of histamine. Histamine is a chemical released by most cell during allergic reaction. Already जो पहले बताया था. Now, synthetic drugs such as bromophenylrenamine, this is dimetap, and tetrapherenadine, that is Selden, are used as antihistamines and they neutralize the effect of histamine in the body. The structure of
these drugs are bromophenylramine. This is dimetap or dimethane, and this is tefendine or seldom. स्ट्रक्चर आप बोथ these इस तरह का स्ट्रक्चर इसका, इस तरह का इसका. The antihistamines are widely used for treatment of skin rashes, conjunctivitis, that is inflammation of eyes, hay fever, nasal discharge, itching of ENT, eyes, nose, and throat, motion sickness, air, road, and sea, nausea in pregnancy, and post-operative vomiting, mild asthma, insect bite, cold, etc. Some other commonly used antihistamines are: first is diphenylhydramine, commonly known as Benadryl. इसकी सिरप सबने देखा होगा. This is the anti-allergic drug known as Benadryl, and chemical name of this is diphenhydramine. And second antihistamine is or anti-allergic drug is phenyramine maleate, commonly known as Avil, and cough syrup दोनों आती है इसकी, टैबलेट भी और कफ सिरप. क्लोरोफेनिरामाइन maleate, this is commonly known as ZEET. तो एलर्जिक जब खांसी वगैरह होती है तो इसका इन सब का यूज किया जाता है. उसी तरह अगला है ट्राइप्रोलिटीन, that is acetyl, and phenothiazine, that is promethazine, or commonly known as phenargan, dimethidine, commonly known as floristat, entazolene, this is known as antistine, and chlorothiophelinate salt, this is known as avomine, and other common drug is anti-allergic drug is cetirizine. The drugs used to remove the, यही चीज हम दोबारा रिपीट करते हैं. The drugs used to remove the effect of histamine secreted by mast cell energy or in allergy called antihistamine. Histamine is a strong vasodilator which contracts bronchi and guts of alimentary canal and relax muscles of blood vessels. Histamine is responsible for nasal congestion during influenza and allergy produced by pollen grains. Synthetic drugs like brompheniramine, that is dimetap, and phenadine, that is Celadon, are used as antihistamines. They compete with receptors of histamine and hence prevents its action. Dimetap and terphenadine, this is Seldom, not phenadine, सबने बोल दिया था. टर्फेनाडाइन विच इज नोन एज सेल्डम, ये पहले भी बता चुके हैं. उसके बाद हम आते हैं आगे. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमफेनिरामाइन, दैट इज डाइमेटेप, एंड इसका स्ट्रक्चर हो गया ये इस तरह से. और उसके बाद ये है टर्फेनाडाइन, दैट इज सेल्डम, जिसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से. नाउ एंटीहिस्टामाइन्स do no effect the secretion of acid from stomach because anti-allergic and anti-acid drugs act on different receptors. Now, antihistamines are called anti-allergic drug also. Important antihistamines are diphenylhydramine, that is Benadryl. उसके अलावा अगला नाम है इसका, जो अभी पढ़ चुके हो, क्लोरोफेनिरामाइन,
promethazine phenyramine maleate which is known as Avil. अब इस सब का स्ट्रक्चर यहाँ पे है जो पहले भी देखा है. पहले है डाइफेनिल हाइड्रामाइन, दिस इज बेनेड्रिल, and this is chlorpheniramine structure of chlorpheniramine, and this is the structure of promethazine, which is commonly known as Avil. Now, antihistamines are available as tablet, nasal sprays, eye drops, liquid, etc. Due to side effect, they must be taken under supervision of doctors. स्ट्रक्चर इसका फिर से देख लेते हैं. ये है डाइफेनिल हाइड्रामाइन विच इज नोन एज बेनेडिल. दूसरा है क्लोरोफेनिरामाइन एंड promethazine, this is known as Avil. Now antihistamines are available as tablet, nasal spray, eye drops, liquid, etc. Due to side effect, they must be taken under supervision of doctor. They are used in treatment of nasal allergy, skin allergy and rashes, weather allergy and rhinitis, eye allergy, etc. Antihistamines are useful in different conditions, but they are more useful in taken before the appearance of symptoms. They produce side effects along with unconsciousness as sleepiness. That is why their prescribed amount must be taken. तो इस तरह से इस पूरे क्लास में तुम लोगों ने क्या पढ़ा? एंटी माइक्रोबियल्स, जिसमें कि 2 तरह की ड्रग थी, सल्फा ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स. उसके अलावा एंटी हिस्टामाइंस ड्रग जो कि एंटी एलर्जिक ड्रग होती है, उसके बारे में डिस्कस किया. तो ये 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप्स थे ड्रग्स के या मेडिसिन के, जिनके बारे में इस क्लास में जाना. तो केमिकल्स इन मेडिसिन, ये दोनों जो पिछला वीडियो और ये वाला वीडियो, ये इसी पे था कि किस तरह से केमिकल्स का यूज़ होता है मेडिसिन या ड्रग बनाने में. तो इसके बाद का भी अभी एक और वीडियो हमें इस टॉपिक पे भेजना है, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे जो कॉमन यूज़ के केमिकल्स होते हैं, जैसे सोप है, डिटर्जेंट है, उनका एक्शन किस तरह से होता है. इस तरह की चीज़ों में हम नेक्स्ट वीडियो में